Good morning, students of 11th class. I am Jayendra Gaddu, your English teacher. Let me tell you that in class 11, you will have to study two books in English language. They are Hornbill, another is Snapshot. Right? Today we are going to start a beautiful poem. The name of the poem is The Laburnum Top. Right? It is written by a poet named Ted Hughes. Here the poet talks about a tree that had become very silent. All of a sudden the tree comes alive, जैसे उस पेड़ पर लाइफ आ जाती है वापस. और फिर से one more time the tree becomes calm, still and subside. Right? ऐसा क्यों होता है वो पोएट इस पोएम के जरिए उनको बताना चाहता है. तो ऐसा तो क्या होता है कि the tree that had become very silent, it becomes active, it becomes energetic, it becomes exciting all of a sudden. One more time, when we move towards the end of the poem, the tree becomes silent again. तो ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है? That is explained very nicely by this quote. I hope you are clear with what I have said so far. Now let us start this poem. Before that, I would request all of you that you keep this textbook with you. You are requested to move on page number 31, where you will find this poem, The Laburnum Top. Laburnum, जैसे मैंने पहले कहा, Laburnum एक पेड़ है, ठीक है? And now let's see what exactly the poet is trying to say in this poem. This is how it goes, right? The laburnum top is silent, quite still. क्या poet कह रहे हैं? Top of the tree. कौन सा tree? Laburnum tree. The top of laburnum tree has become silent. Everything is still there. There is no movement of anything. There is no sound. There is no movement. There is no chirping of bird. There is no wind blowing. The tree has become very still. Right? The laburnum top is silent, quiet, still. In the afternoon yellow September sunlight. Now you may have a question, sorry, yellow September, what does it mean? My dear students, here the poet, by using the word yellow September, he mentions the season, autumn. Right? Now in Hindi, autumn is called Pankhar, and the same word is there for Gujarati language as well, Pankhar Ritu. Right? Now what happens in autumn season? As the very name in Hindi and Gujarati suggests, Pan Khar. Pan means leaves of the tree. Khar yani it falls down. So dear students, what happens in autumn season? The trees shed their leaves. So when the poet talks about laburnum top, at that time, which season is there? It is autumn season, right? The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight. Afternoon का time है, sunlight बहुत तेज है, और trees, some trees have turned yellow. Some trees are turning yellow. ऑटम सीजन है ना बेटा, इसीलिए उसके जो पत्ते हैं धीरे धीरे पीले होते जाते हैं और आफ्टर सम टाइम्स दे fall down the ground. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight. Yellow indicates autumn. पीला पड़ गया पूरा पेड़.
A few leaves yellowing, कुछ जो पत्ते हैं पेड़ के वो येलो हो रहे हैं. All its seeds fallen, बाकी सारे जो पत्ते और जो भी है वो गिर चुके हैं नीचे. और कुछ जो बाकी है they are turning yellow, वो येलो हो रहे हैं. It means within few days even these leaves, remaining leaves are going to fall. I hope you are clear with this. Let us move to the next stanza. Till the goldfinch comes. Goldfinch, goldfinch जो है एक बर्ड होता है, ठीक है. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup. Twitching chirrup, chirrup का मीनिंग होता है साउंड्स जो बर्ड्स करते हैं. ट्विचिंग का मीनिंग होता है some unexpected movements of body. A suddenness has come from the word sudden or suddenly, akasmat, achanak. A suddenness, a startlement at a branch end. Right? What happens in these first two lines of the second stanza? A bird named goldfinch comes, and it comes twitching, it comes chirruping, आवाज करता करता आता है. It comes startling everything around, और सबको चौंकाता हुआ, कुछ अलग साउंड्स करता हुआ. ये बर्ड कहाँ आता है? आकर बैठता है एट द एंड ऑफ द ब्रांच. ब्रांच यानी यहाँ पर इसको हम डाली बोलते हैं, शाखा, पेड़. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. पेड़ ब्रांच का जो एंड वाला हिस्सा है, शाखा जहाँ पर पूरी, वहाँ पर आकर ये गोल्डफिंच बैठता है. अब उसके बैठने से क्या होता है? Then sleek as a lizard. Sleek का मीनिंग होता है स्मूथ. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness. My dear students, in the fourth line of the second stanza, the word thickness is used. Now thickness is the middle part of the tree, जहाँ पर पेड़ के पत्ते होते हैं, जहाँ पर पेड़ के फल लगते हैं, जो हिस्सा घना होता है, एकदम घना डाल भरा हुआ. तो she enters the thickness, एकदम लिजार्ड के जैसे वो स्मूथ है और एकदम अलर्ट होकर वो पेड़ का जो थिकनेस वाला पार्ट, मिडल पार्ट ऑफ द ट्री, वहां पर वो एंटर होता है. आई होप यू आर गेटिंग दिस बेटर. शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स ऑफ चिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स. ब्यूटीफुल लाइन है. वर्ड कहते हैं जब ये गोल्डफिंच enters the middle part of the tree, over there this bird had built its nest, and there were some babies of this bird, and that is why when this mother bird goldfinch enters this middle part of the tree, the nest comes alive by different exciting sounds which were made by the babies of this bird. I hope you are clear with this. Let me tell you again. She enters the thickness and a machine starts up. अब मशीन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? मशीन का मीनिंग यहाँ पर है this nest. Nest starts up of chitterings, अलग अलग happy sounds. ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंख का फड़फड़ाना. क्यों?
the baby birds become very excited. At the same time, as they were hungry, maybe they knew that the mother had come with enough food for them. That's why they were all fluffing their wings. They were all making some sounds which were making the atmosphere very exciting. And the tree has become alive. जैसे मान लो पेड़ पे जान आ गई, right? Otherwise वहाँ सन्नाटा था. And it is written in the first line. क्या लाइन है? The laburnum top is silent. पहली लाइन में लिखा है. उसके बाद the whole tree trembles and thrills. थ्रिल का मीनिंग होता है एक्साइट होना, है ना? इसीलिए कुछ मूवीज होते हैं जिसके बारे में थ्रिलर बोला जाता है. अब थ्रिलर डज नॉट मीन कि उसमें कुछ ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन एनीथिंग दैट एक्साइट्स यू, दैट सरप्राइजेस you people, that is called thrilling, right? The whole tree trembles, and tremble का meaning होता है कांपना. क्योंकि all baby birds had started some movements there, that is why. The whole tree trembles and thrills. पूरा पेड़ excited है. The वातावरण जिसको बोलते हैं ना बेटा, atmosphere, that was on the tree had become exciting. It is the engine of our family. ये जो nest है जिसमें उसके बच्चे हैं, that is the engine of the family. अब engine जो होता है वो बहुत important रोल प्ले करता है ना? एक ट्रेन है, अगर ट्रेन का इंजन ही नहीं है तो you can understand what would happen. गाड़ी है, गाड़ी का इंजन ही नहीं है तो इंजन जो है वो हार्ट है ना? It is the engine of a family. Nest has given security to goldfinch and her family, and that's why nest is as important as an engine for a train or a car, right? It is the engine of the family. She stocks it full. स्टॉक का मीनिंग यहाँ पर है फीड करना. वो अपने बच्चों को पेट भर के खिला रही है, जो भी लाई है वो सब खिला रही है. Then flirts out to a branch end. उसके बाद वो वहाँ से जंप करके पेड़ का जो ब्रांच का जो एंड वाला हिस्सा, एंड ऑफ द ब्रांच, वहाँ पर आके बैठ जाते हैं. अब इसका मीनिंग ये है कि बच्चे जो है वो कहाँ पर है? दे आर इन द थिकनेस ऑफ द ट्री, दे आर इन द मिडल पार्ट ऑफ द ट्री, देयर आर सो मेनी लीव्स अराउंड. और जो मदर बर्ड है वो कहाँ पर है? दैट इज एट द ब्रांच एंड. इट मीन्स ब्रांच का एंड और जहाँ पर बच्चे, उसके बीच में एक लेयर है पत्तों का, जिसके कारण मदर बर्ड पूरी तरह से अपने बच्चों को देख नहीं सकती है, और बच्चों के लिए भी मदर बर्ड इज नॉट क्लियरली विजिबल. ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी मीनिंग वाली लाइन नेक्स्ट मीनिंग वाला जो मीनिंग है वो नेक्स्ट लाइन में आता है बेटा, राइट? She stalks it full, then flirts out to a branch end, showing her bad face identity mask. ऐसा लगता है जैसे आप कोई पर्दे के पीछे छुप जाते हैं, या कुछ ऐसे लेयर्स है जिसके कारण ऐसा लगता है कि आपने कोई मास्क पहन के रखा है. That's why you are not visible clearly, right? तो क्योंकि मदर बर्ड इज एट द एंड ऑफ द ब्रांच, द बेबीज आर इन द मिडल ऑफ द ट्री, एंड दैट्स व्हाई मदर बर्ड इज नॉट क्लियरली विजिबल, बिकॉज टू सी थ्रू बीच में क्या है? बहुत सारे पत्ते,
इसके कारण जैसे ऐसा लगता है कि मदर बर्ड क्यों विजिबल नहीं है, मान लो उसने कोई मास्क पहन कर रखा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। देन विथ ईरी डेलिकेट विसल chirrup whisperings, eerie यानी mysterious, strange, something that is difficult to understand, ये मदर बर्ड गोल्डफिंच चिरप करता हुआ, चर्पिंग करता हुआ, विस्परिंग्स का मीनिंग है सॉफ्ट साउंड्स प्रोड्यूस करता हुआ, शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मीनिंग यहाँ पर समझना है टुवर्ड्स द गॉड, टुवर्ड्स द हेवन, यानी एकदम बहुत ऊंचाई तक ये बर्ड चला जाता है, राइट। Then with eerie delicate whistle, chirrup, whispering, कुछ ऐसी आवाज करता हुआ जो समझने में थोड़ा मिस्टीरियस हो, ना समझ में आए, ऐसी आवाज करता हुआ ये गोल्डफिंच वहां से उड़ जाता है। किस तरफ उड़ता है? खुला आसमान, इनफाइनाइट यानी समथिंग दैट इज नो एंड, आसमान का कोई एंड नहीं। And the laburnum subsides to empty, इसका मीनिंग है कि laburnum ट्री जो है again becomes calm, still and composed. Right? I hope you all have understood. Let me brief you in 2 minutes. Here the poet in the first 3 lines says that the laburnum top was silent. There was no one on the tree except those baby birds, but the top of the tree was silent because there was no one around. Second thing the poet talks about in the first stanza is he talks about autumn season, because of that tree the leaves of the trees had turned yellow. Some of them had fallen down, some of them were about to fall. Then in the next stanza the poet says that after some time a bird named goldfinch comes there. While making some sounds it enters the thickness of the tree, यानी goldfinch enters the middle part of the tree. किस तरह से? Sleek as lizard, एकदम स्मूथली, अलर्ट होकर, चौकन्ना होकर गोल्डफिंच बर्ड एंटर्स द थिकनेस ऑफ द ट्री। बट जैसे ही वो वहां जाता है तो क्या देखने को मिलता है? ये बर्ड जब वहां जाता है तो क्या देखने को मिलता है? अ मशीन स्टार्ट्स अप, ऐसा एक वर्ड यूज हुआ है, यानी द नेस्ट दैट वाज बिल्ट बाय दिस मदर बर्ड, देयर वर सम बेबीज growing up. All of a sudden, when the baby birds saw the mother bird, they all became excited. They started flapping their wings due to happiness, and that really made the tree alive. That's what the poet imagines. Birds की आवाज़ के कारण, baby birds की आवाज़ के कारण, जो पेड़ अभी तक शांत था, मान लो वो उसमें जान आ जाता, right? उसके बाद लिखा है कि this nest which has the baby birds, so this nest is like an engine for the mother bird. क्यों? ये नेस्ट के कारण ही उसके बच्चे अभी तक सेफ और अपने बच्चों को वो खिलाकर ब्रांच के एंड पर बैठ जाते हैं। और पोएट इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा लगता है, क्योंकि जो जब वो ब्रांच के एंड पर जाती है, दिस मदर बर्ड वाज नॉट क्लियरली विजिबल, ऐसा लगता था कि उसने कोई मास्क पहन के रखा। तो ये मास्क कोई ओरिजिनल मास्क नहीं है, वो क्या है? द बर्ड इज एट द एंड ऑफ द ब्रांच एंड द बेबी बर्ड्स आर इन द मिडल ऑफ द ट्री। तो अगर बच्चों को देखना है उस तरफ, तो बीच में क्या है? बहुत सारे पत्ते, ब्रांच, डाली, शाखा, जो सब है।
जिसके कारण मदर बर्ड इज नॉट क्लियरली विजिबल। जैसे हमने मास्क पहना है तो हमको कोई पहचान नहीं सकता जल्दी से, तो मदर बर्ड भी क्लियरली विजिबल नहीं है, बीच में एक नेचुरल मास्क जैसे बन चुका है। आई होप यू आर क्लियर। और लास्ट 2 लाइन्स जो है इसमें पोएट क्या कहते हैं, सॉरी लास्ट 3 लाइन्स से पोएट क्या कहता है, ही सेज दैट कि after feeding the babies, the mother bird makes some sounds, whispers yani soft sounds, and then the mother bird launches away in the infinite, खुले आसमान में वो चली जाती है, and that makes the tree silent again, right? So the tree that was silent, that was still, had no life at all, becomes active all of a sudden with the arrival of goldfinch, who feeds her babies, that makes babies very happy and excited, that turns the tree alive, right? And after feeding her baby, she goes out, and that makes the tree silent again, because the going of mother, flying away of mother, would also make the baby birds silent. Students, I hope I am clear with this. Keep reading at home, keep revising the things that you get in form of videos, right? And do make a note of things that you don't understand so that it can be solved afterwards. Do take good care of everybody at home. Thank you. Jai Hind.